Hi friends, this is Prabir Kundu. Once again, I welcome all of you from core of my heart for continuously watching my videos on my YouTube and supporting me by liking and subscribing. Hi दोस्तों, मैं प्रबीर कुंडू आप सभी लोगों का, आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का, मेरे प्यारे व्यूअर्स का, माय वेल विशर्स, मैं आपको दिल से गर्म जोशी से स्वागत करता हूं मेरे इस 4th वीडियो ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज। उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले तीनों वीडियोस आपको काफी पसंद आया होगा। हाँ, आज के वीडियो में टुडे सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज सेल्फ awareness, as I have discussed regarding the self-awareness with my 2 interesting stories in my last 2 episodes. So what is self-awareness? Self-awareness क्या होता है? अपने ऊपर जागरूकता, अपने व्यवहार के ऊपर, to know who am I, to know who you are, okay? और हमारा इमोशंस, हमारा फीलिंग्स, हमारा थॉट्स हमको कहाँ कहाँ ले जाता है, क्या क्या सोचता है, किस किस तरह का थॉट्स आता है, टू नो मोर एंड मोर डीप अबाउट आवर सेल्फ एंड आवर इमोशंस एंड आवर थॉट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाई सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, we can aware of all the emotions that is coming out from our mind or coming out from our body in advance. Either it is a positive emotion or it is a negative emotion, so that in time, समय रहते ही हम उस emotions को अगर जरूरी है तभी उसको express करें और we control it, we accept it और उसको हम अपने पास होल्ड करके रखें, so that it should not give rise to any kind of unincidents or mishappenings or miscommunicate with anybody, and our acceptance, our progress goes up and up and up. ठीक है? और एक कारण क्या, what is the another reason for the self awareness is that कि हमारा जो ये माइंड है, ठीक है ना, इस माइंड को हमको कांस्टेंट करके रखने का है। आवर माइंड इज नेवर कांस्टेंट। आई टोल्ड यू इन माय लास्ट एपिसोड दैट इन 24 आवर्स आवर माइंड कम्स अक्रॉस 65 to 70,000 थॉट्स। ओके, इसके मतलब एक सेकंड के कम फ्रैक्शन में भी एक नया थॉट हमारे माइंड को आकर के कोलाइड करता है। तो माइंड हमारा कभी भी जो है वो रेस्ट में नहीं है। और अगर हमको काम करना है, हमको कूलली कंसंट्रेट करना है, हमको अपना प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, तो हमारा ये माइंड को जो है कूल रहना पड़ेगा। आवर माइंड नीड टू बी कंपोज्ड। currently we are the slave of our mind. लेकिन हमको करना क्या है? What we need to do is that the mind should be our slave. So it is a 360-degree full change. Now question is this: how we will achieve, how we will control our mind, how we will ensure that our mind follows our instruction only and he works, he behaves with us as if our mind is our slave. Right now, so for this there are 2 methods are there, approved methods are there. What are that? First method is meditation, ध्यान लगाना। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सुना है होगा, many of you must have heard regarding the meditation. And what is the second? The second is mindfulness. ठीक है ना? Now question is this, that why meditation and why mindfulness? Because the primary objective and the main objective of meditation and mindfulness is to fix the mind, is to control the mind in the composed way, cool way, so that we can be in the our present time. ठीक है ना? जब हम अपने प्रेजेंट टाइम में रहेंगे, हम अपने प्रेजेंट टाइम को मैक्सिमम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, हमारे माइंड को हम भूत में या भविष्य में घूमने के लिए नहीं देंगे, तो क्या होगा? अभी क्या है? अभी हमारा राइट नाउ आवर माइंड, वी स्पेंड आवर 90% ऑफ आवर डेज टाइम आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर।
Now, and 10% in the present. If we have to lead a beautiful life, if we have to lead a progressive life, if we have to lead a successful life, then what we need to do? We need to reverse this equation. Means we have to utilize 90% of our present time in the productive manner so that our future will be much better. And currently it is happening just opposite to that. So we'll see that how we can use our 90% of the present time in the productive way. So the first methodology is meditation, ध्यान लगाना. इसमें क्या करते हैं? आराम से बैठ जाते हैं, ढीला ढाला कपड़ा पहन करके, और अपने दिमाग को किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. हाँ, और कोशिश करते हैं कि उस पॉइंट पे ही आवर माइंड शुड बी फिक्स्ड. लेकिन रहेगा नहीं, ऐसा होगा नहीं. आप इनिशियली यू मे नॉट बी एबल टू फिक्स अप योर माइंड फॉर इवन अ मिनट ऑल्सो. वो फट से क्या होएगा, आधा मिनट होएगा, उसके बाद इट विल गो टू आइदर पास्ट और इट विल गो टू द फ्यूचर, बिकॉज इट विल कीप ऑन शंटिंग बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट में तो टिकता ही नहीं माइंड हमारा, ठीक है ना. तो वो धीमे धीमे स्लोली विद द प्रैक्टिस क्या होएगा, वो पहले 1 मिनट होएगा, देन 2 मिनट होएगा, देन 5 मिनट होएगा, देन इट विल बी 10 मिनट्स, देन इट विल बी आवर. सी व्हेन आई हैव स्टार्टेड मेडिटेशन आई कुड एबल टू डू ओनली 1.5 मिनट मैक्सिमम. फर्स्ट डे 1 मिनट भी नहीं हो पाया था. एंड स्लोली आफ्टर हार्ड प्रैक्टिस नाउ आफ्टर a year or so I can meditate more than an hour. And every day I meditate more than an hour on the fixed timing only. So you can also do. And the greatest advantage of the meditation is that your mind, जो कि हमेशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भागता ही रहता है, it keeps on running, it keeps on settling, it will be fixed, it will be cool, it will be composed, and it will be in the present. आप जो भी instruction, whatever instruction you will give to the mind, your mind will listen to that. Your mind will remain in the present state. So that is the biggest advantage of the meditation. ठीक है ना? Now what is the second? Second is mindfulness. Mindfulness मतलब क्या? कि दिमाग क्या भरा होना चाहिए हमेशा. mindful मतलब दिमाग भरा होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. The purpose of the mindfulness, the objective of the mindfulness, that your mind should be always empty. ये जो पास्ट का और फ्यूचर का ये सब धमाल तमाल हमारे दिमाग में चलता रहता है ना, कि somebody has hurt us, तो उसको मारेंगे, we'll take a revenge from him, or we want to be करोड़पति in the future. ये सब whatever it is happening inside our mind, no, so इस चीज को you have to give a full stop. The objective of the mindfulness is to clear the mind always. When the mind will be clear, then the mind will be in the present. When we will be present, then we will focus. We can able to concentrate on our present job, and then chances of our success, chances of our progress will be much higher than when as compared to the average state when the people are not in the mindfulness stage. ठीक है ना? अभी मैं आपको 2 इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ रिगार्डिंग माइंडफुलनेस. ठीक है ना? ठीक, हम लोग फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं, or we are going down to the stairs, or we are coming up through the stairs. Have you ever noticed that is the activity you are doing in the present? आप walk कर रहे हो, मतलब you are walking in the present. तो now I will let you know कि you know whether you are mindful or not. तो कभी आपने have you ever noticed that how much pressure your foot is putting on the ground? सच बताइएगा. Tell me the truth. Have you ever noticed? The answer will be no, because your mind is not in the present. You are thinking something of the past, or you are thinking something of the future. The second incident, you know, while after eating tea or after eating your lunch or something, you go to wash the hand in the wash basin. तो कभी ऐसा महसूस किया, have you ever realized like that how much pressure your both the fingers are putting on one another? Did you ever bother? Because that is the activity you are doing in the present, and if you are in the present, you must know. But the answer is once again big no. Why? Because we are not in the present. While we are, washing our hand, we are thinking something of the past, or we are thinking something of the present. So these 2 incidents, what I narrated to you, is the big example to prove you that we feel that we are in the present, but we are not in the present. Our mind is either taking it to the future, or they are taking it to the past. And what is our job? We have to reverse the process. We have to keep our mind in the, at the focused way.
तो इस कैसे करने का, हाउ कैन वी डू, एज आई टोल्ड इन द मेडिटेशन, हियर व्हाट यू नीड टू डू नाउ व्हेन यू आर वॉकिंग. When you are walking, either you are walking on the floor going from one place to another place, or you are coming up through the stairs, or you are going down to the stairs, please be very, very attentive, very, very aware to notice that how much pressure your foot are putting on the ground. How can you do that? When your whole concentration, when your whole attention will be on the both pair of your feet. And you can notice always that how much pressure, or you are washing your both the hands and the wash basin, you should be 100% attentive just to notice. You should be aware that how much pressure this one finger is putting on the another finger. Nothing else. आपको कुछ भी नहीं सोचने का है, आपको यही दो काम करने का to the beginning, कि जब आप चल रहे हैं, when you are walking, you have to attentive, you have to focus to understand, to know that how much pressure your feet, pair of feet are putting on the ground. And at the time of the washing of your hands, you have to observe that how much pressure both of your fingers are putting. आप करके देखिए. I am telling you that initially you may not be able to concentrate for a minute even. नहीं हो पाएगा. आप जैसे ही करना शुरू करोगे, आधा मिनट के बाद, maybe after 30 or 40 seconds, your mind will start thinking something else of the past or future. Because that is the job of the mind. And we are not we are the slave of the mind. Right now? तो हमको क्या करने का, उस practice को, we keep on doing the practicing. Right now, whenever we are walking, whenever we are coming up the stairs, or we are going down to the stairs, or when we are in a walking mode, we have to make it a point, we have to practice कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमारे चलने के ऊपर होगा और हमारे दोनों पैरों के ऊपर होगा कि वो कितना प्रेशर ग्राउंड में डाल रहा है. आपको केवल इतना ही सोचना है और कुछ नहीं सोचने का है. और यह भी नोटिस करने का है कि अगर आपने 5 मिनट, इफ यू हैव डन दिस एक्सरसाइज फॉर 5 मिनट, इन दिस 5 मिनट हाउ मच टाइम डिस्ट्रैक्शन हैज हैपेंड, मतलब आपका ध्यान आपके पैरों से उठ करके दूसरी तरफ चला गया, आपके माइंड ने आपको डाइवर्ट करने का कोशिश किया. इसको भी आपको काउंट करने का है. और धीमे धीमे, स्लोली एंड स्लोली, यू हैव टू इंक्रीज योर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. पहले 2 मिनट, उसके बाद 4 मिनट, उसके बाद 6 मिनट. तो ये दोनों एक्सरसाइज को, पहला मेडिटेशन और दूसरा माइंडफुलनेस. और माइंडफुलनेस के लिए आई हैव गिवन यू दिस 2 एक्सरसाइजेस. ओके, व्हाइल यू आर वॉकिंग, योर फुल फोकस ऑन द फीट so as to understand that how much pressure, and when you are washing your hands. Okay, so slowly and slowly you will see that the time of this observation period will increasing, and you will start finding a lot of interest on that. और धीरे धीरे ये 5 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, तो धीमे धीमे आप देखोगे आपका your mind becomes your slave. And what will happen ultimately, that आपके अंदर का जो emotions, whatever the emotions are coming out or coming from your mind, either it is a positive emotion or it is a negative emotion, ये आप पहले से जान जाओगे, जो आप पहले नहीं कर पाते थे. ठीक है ना? The biggest benefit of this mindfulness or meditation, आपको अपने आप पता चल जाएगा. कैसे पता चल जाएगा? कि जो इमोशंस जो आप पहले नहीं जान पाते थे, कि आपको गुस्सा आ गया, आप बड़बड़ा करके उसके ऊपर धाड़-धूड़ कर दिया, और आपको जैसे गुस्सा आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि मेरे को गुस्सा आ रहा है और मुझे क्या करने का, वेदर आई हैव टू कंट्रोल दिस एंगर और व्हाट टू डू. और अगर खुशी आ रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, तो बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट यू विल स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड ऑफ योर फीलिंग्स. Once you get a start slowly and control of your emotions and control of your feelings, then you are becoming master of yours. आप अपना मास्टर आप खुद हो रहे हैं. आपका सेल्फ कंट्रोल जो है वो बढ़ रहा है. आपका your self awareness is increasing, and what will happen? This will have an impact on your professional mind. This will have an impact on your professional dealing. This will have an impact on your behavior. This will have an impact on the attitude and your acceptance. Your communication, your behavior will be much better on a higher grade, as compared to the average people. And the final result, the final result is that we will be one of the happiest person, we will be one of the successful person, we will be one of the progressive person. Okay, so that are the distinctive advantage for being self-aware.